Good morning, students. How are you all? Hope you all fine at your homes. I'm your computer teacher, Shifa Monga from California Public School. In the last video, we have started our lesson number 1 and we have discussed some important parts of this chapter. We have discussed hardware, software, some internal components of a computer like CPU, motherboard, PCI, sound card, RAM, video card. In this video we are going to start ROM. What is ROM? So let's start. ROM stands for read only memory. It is a type of memory from which we can read information but cannot write on it. It is a volatile, non-volatile memory. Therefore the information is stored permanently. If you remember, in the last video we have discussed RAM, that is random access memory. So there is a difference between RAM and ROM. RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. RAM में क्या होता था, when power gets switched off तो क्या हो जाता था, आपका डेटा डिलीट हो जाता था, इरेज हो जाता था. बट इन रोम इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इन केस अगर कोई पावर फेलियर होता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इन दैट केस आपके डेटा को कुछ नहीं होगा. योर डेटा विल बी सेव्ड इन योर कंप्यूटर. It is known as a read-only memory. That means only read. You can only read the data. You cannot erase it or you cannot modify it. You cannot write on it. So only reading, not writing and changing. So a ROM stores the instruction required to start a computer. So there are 3 types of ROM. Why we need a ROM? To start a computer. It is a set of instruction. A ROM has a set of instruction which is required to start your computer. So there are 3 types of ROM: PROM, EPROM and EEPROM. There is an example in your book that ROM is like a audio video disc. Once the songs are burned on a CD, the disc contents cannot be changed. For example, you have a CD और आपने क्या किया, उसमें कुछ सॉन्ग्स डाले, बट वो सॉन्ग्स आप सुन सकते हो बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर रोम. आफ्टर रोम वी हैव अ डिस्क ड्राइव. डिस्क ड्राइव इज अ हार्डवेयर component in a computer that enable user to read, write, delete and modify data on the storage disk. It is either a built-in or external component of a disk that manages the input-output operations of a disk. Disk drives are of several types such as hard disk drive, CD drives, DVD drive. The most commonly used disk drive is the hard disk drive. So disk drive is also a hardware component है. It is built-in. built-in कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है और इनकेस अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो आप उसको एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हो. आप मार्केट से लेकर भी उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा सकते हो. डिस्क ड्राइव करता क्या है? इट इनेबल्स द यूज़र टू रीड, राइट, डिलीट और मॉडिफाई डेटा ऑन अ स्टोरेज डिस्क. स्टोरेज डिस्क में जितना भी डेटा है आप उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. रीड, राइट, डिलीट एंड मॉडिफाई. मॉडिफाई मीन्स टू चेंज करना किसी चीज़ को. सो डिस्क ड्राइव, वी हैव अ नंबर ऑफ डिस्क ड्राइव, टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव: हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, बट द मोस्ट कॉमनली इज हार्ड डिस्क ड्राइव. Next is SMPS. SMPS stands for a switched mode power supply. It is essential for safe running of power consuming electrical and electronic appliances. SMPS uses a switch. So I forgot to tell you that this is your read only memory chip, this one. So next to SMPS, SMPS uses a switching regulator to control and stabilize the output voltage by switching the load current on and off. In a very simple language, what actually SMPS does. Everybody has
AC इन योर होम्स. AC है, AC के साथ हमारे पास एक स्टेबलाइजर भी रहता है. स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है. आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है टू सेव यू एनी काइंड ऑफ लॉस और एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट. तो SMPS इज इंस्टॉल्ड इन अ स्टेबलाइजर जो कि आपके सिस्टम को सेफ रखता है. सो आफ्टर दिस वी हैव अ डायग्राम अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई. अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई मीन्स ऐसी पावर सप्लाई जो कि अनरेगुलेटेड है, जो ऊपर नीचे हो रही है. SMPS के अंदर गई, उसके बाद वो क्या हो गई, किस में चेंज हो गई? रेगुलेटेड पावर सप्लाई में चेंज हो गई. एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर components. So this is the diagram. After this we have a modem. Modem stands for modulator and demodulator. It is also a hardware component which allows a computer to send or receive information through telephone lines by converting digital data into a analog signal. Basically what actually modem does, it converts the signal from डिजिटल टू एनालॉग. क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या कर देता है? चेंज कर देता है. एंड ऑन द सेम नोट, व्हाट इज डीमॉड्यूलेटर डज? मोड मीन्स मॉड्यूलेटर, मो मीन्स मॉड्यूलेटर, DEM मीन्स डीमॉड्यूलेटर. सो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द डेटा बैक फ्रॉम एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल. मॉडेम क्या करता है? फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. So we have three kinds of modem: internal modem, external modem, and a PC card modem. So internal modem, it is already installed in the computer. It is in the form of card that is inserted into one of the slot on the main board. So जो internal modem है ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल होता है. आपको एक्सटर्नली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज ऑलरेडी बिल्ट इन. किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ड. कार्ड की फॉर्म में रहता है. और वो जो कार्ड है वो कहाँ पे इंसर्टेड होता है? दैट इज ऑन द मेन बोर्ड, दैट इज योर मदर बोर्ड. एक्सटर्नल मॉडेम, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉडेम बट इट इज नॉट इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU. आपको इसे मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है विद योर कंप्यूटर. सो दिस टाइप ऑफ मॉडेम हैज इंडिकेटर लाइट्स. इफ यू हैव द सीन इन दिस वीडियो, सो दिस इज योर एक्सटर्नल मॉडेम. एक्सटर्नल मॉडेम, यहाँ पे कुछ लाइट्स होती हैं व्हेन इट गेट स्विच्ड ऑन. तो यहाँ पे कुछ लाइट्स होती हैं. स्पीड कितनी होती है इसकी? BPS and KBPS. BPS means bits per second. KB, it's kilobits per second. Maximum speed of this modem is 56 kilobits per second. But if the telephone line quality is not good, it will not be able to work with its maximum speed. So if you want it to have a maximum speed, then your quality of telephone must be good. So after this we have a PC card modem. So in our PC card modem, first of all it is very small in size. इसका साइज कितना होता है? That the size of your credit card. उस जितना इसका साइज होता है. एंड दे आर बेसिकली डिजाइन फॉर, स्पेशली डिजाइन फॉर लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस. ये किस में यूज किए जाते हैं? दे आर यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड योर स्मार्टफोन्स. और इसमें जो कार्ड रहता है, साइज कितना रहता है उस कार्ड का? ओनली सेम एज योर क्रेडिट कार्ड साइज. तो देर इज नो नीड टू हैव अ केबल्स. इसमें केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये जो हम लोगों को एक्सटर्नली लगानी पड़ती हैं, तो उसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. सो बेसिकली PC card is a combination of your external and internal modem. It's a combination of internal and external modem. This card is powered by a computer. So here is the picture of your PC card modem.
So after PC card we have a very good heat sink. A heat sink is an electronic device that is designed to disperse mean to release the heat generated by the CPU. It is made up of a metal such as a copper or aluminium alloy and normally uses a fan to keep the processor cool. So heat sink why we use heat sink in our electronic devices or appliances? To release the heat produced by these appliances. If you have seen in your CPU we have a fan. फैन क्या करता है, पूरे के पूरे जो अंदर जितना भी हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं उनको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीट सिंक यूज़ करते हैं कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम from any kind of short circuit or any kind of heat. We have a heat sink to release the heat from the system. Heat sink is commonly used in all CPUs. It is also used in refrigerator, air conditioning system, GPU and video card processor. It is used in almost in every appliances to make your system cool. So after this is the picture of your heat sink. If you have seen, there is a fan, देखिए ये fan है that makes your processor cool. So after this we have a port. A computer port is a slot on a motherboard that acts as a point of connection between a computer and a external device. So we have a number of ports. Why we are using this port? Because port makes the connection between your computer and your external device. It make a connection. So here we have the list of all the ports. So this is a serial port, parallel port, USB port, PS/2 port, firewire, VGA, HDMI and Ethernet port and a audio port. So in the corresponding we have the purposes of each and every port. Let us discuss one by one. In the first, serial port. It transmits data 1 bit at a time over a single wire. How many bits? कितने bits हम लोग भेज सकते हैं? Only 1 bit transfer. Only 1 bit transfer. It is used for devices that do not require high speed transmission. It is basically used in mouse and keyboard. It is used to connect modem, hence called communication port. The other name of your serial port is called communication port. It is used to transfer 1 bit at a time on a single wire. कहाँ पे चाहिए होते हैं? Where you do not need any high speed transmission. Transmission means transfer. So after this we have a parallel port. Parallel to we can transfer several bits of data together at one time. In this we can transfer only 1 bit, but in parallel port we can transfer multiple bits. It is used for devices that require higher speed transmission. So it is opposite from serial port. Here we do not require हाई स्पीड ट्रांसमिशन, है वी रिक्वायर्ड हाई स्पीड. मतलब आपको किसी डेटा को बहुत जल्दी ट्रांसफर करना है, आप चाहते हो कि 1 सेकेंड के अंदर मेरे इतने बिट्स ट्रांसफर हो जाए. इन दैट केस वी नीड पैरेलल पोर्ट. आफ्टर दिस वी हैव अ USB port. It's a universal serial bus port. It is used to transfer data and can also act as a power supply for devices connected to it. So basically it is used to provide power supply to the devices connected to it. जो जितने भी devices के साथ connected है उनको power supply कौन provide करता है? Your USB. And where we can use this? Flash drives, scanners, tablets, digital. After this we have a PS/2 port. PS/2 connector was developed by IBM year 1987. PS/2 port is now considered as a legacy port as it has been replaced by a USB port. पहले हम USB port use करते थे, but now
days we use this port. So here this is the extension of this port. इस port में कुछ limitations थी, that why the developer has developed these port. And what is the usage? It is used for attaching keyboard and mouse to a computer. So after this we have fireware. So here is the picture of a fireware. It is also known as IEEE 1394. It is developed by the company Apple in the year 1994 and it can transfer large amount of data. अब यहाँ पे speed देखो कितनी है, 800 megabytes per second. MBPS megabytes per second and connect different devices. So it is used to connect camcorders. Camcorders means your cameras and video equipments to the computer. So here this is basically used to connect video hardwares with your computer, and it has a very important point that it has a speed of 800 Mbps. So I think till now this is sufficient for today's period. In the next period we will move to the next part, all the remaining ports of this chapter and the another input and output devices. Then till then, take care, bye and have a nice day.